Assalamu alaikum. Today we will be discussing The Chimney Sweeper, a poem written by William Blake. Actually, this poem is in two parts. One was published in his Songs of Innocence, and other was published in his Songs of Experience. In both these poems, William Blake talks about the child labor and how the child labor was justified. Whether William Blake was against this child labor or whether he was supporting this child labor is not sure, but one thing is very much clear. William Blake finds it very hard to accept the situation because black children who were sold as slaves by their parents when they were very young worked as chimney sweepers, and they worked in very harsh circumstances. Religion was used in order to support this kind of practices, which were very common among Western people at the time. Whether how the situation has changed with years past, but the poem is a fine commentary how white considered themselves a superior race to all other races of the world, and how white exploited uh, black, especially black people, in order to do inferior jobs. This has been mentioned in this poem. तो हम इस पोएम को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी बात करने वाली होगी, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे. पोएम जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है. व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग एंड माय फादर सोल्ड मी व्हाइल एट माय टंग could scarcely cry weep weep weep, so your chimneys I sweep and in suit I sleep. तो ये फर्स्ट स्टैंजा में जो है वो a black child is talking to someone, perhaps some white man, किसी सफ़ेद फॉर्म शख्स से एक स्याह फॉर्म चिमनी स्वीपर जो है वो बात कर रहा है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ फौत हो गई और मेरे बाप ने मुझको बेच दिया. ये उस वक़्त की बात है जब मुझे अच्छी तरह से बोलना भी नहीं आता था, मुझे सिर्फ जो है वो रोना आता था. उस वक़्त से मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा काम जो है वो क्या है कि मैं आपकी चिमनीज़ इनको साफ़ करता हूँ, और मेरे जिस सोने की जगह जो है वो वही धुआं है, वही गंदगी है जो उन चिमनियों से निकलता है. नेक्स्ट स्टैंजा देखें. There is little Tom Decker who cried when his head that curled like a lamb back was shaved, so I said. अब वो he is talking about another boy who is black and who is doing the same work. Tom Decker was another boy who was brought to sweep chimneys. अच्छा, ये एक जो है वो रूल बनाया गया. इट वाज थॉट दैट द हेयर ऑफ चिमनी स्वीपर वर हैंडल टू डू वर्क एफिशिएंटली, सो दे शुड बी क्लीन हेडेड. उनके हेड जो है उनको जो है वो शेव कर देना चाहिए. तो ही वाज वेरी सैड व्हेन दिस वाज डन. तो मैंने उससे जो है वो क्या कहा, सो आई सेड हश टॉम नेवर माइंड इट फॉर व्हेन योर हेड इज बेयर, कि इस बात की परवाह ना करो जब आपके बाल जो है वो काट दिए जाते हैं. यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर. फिर जो है वो धुएं से आपके बाल जो है वो खराब नहीं होते. अ सॉर्ट ऑफ कंसोलेशन है जिसे कहते हैं, थोड़ी सी तसल्ली जो है उसको जो है वो दी जा रही है. लेकिन इन लाइनों में एक क्रिटिसिज्म ऑन द प्रैक्टिस वो वेरी मच क्लियर है कि किस तरह से एक बैड प्रैक्टिस को, एक गलत काम को जो है वो जस्टिफाई कर दिया जाता है किसी पॉजिटिव काम के साथ जो है वो मिला के. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा जो है. एंड सो ही वाज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in
coffins of black. अब यहाँ पे कि उस बच्चे ने जो है वो एक रात जो है वो ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में उसने जो है वो क्या देखा कि बहुत सारे जो है ब्लैक चिल्ड्रन, उनके नाम जो है उनमें से कुछ के नाम जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं, और वहां उनको जो है वो कहाँ पे बंद किया गया था, ब्लैक जो है कोफन्स में उनको जो है वो बंद किया गया था। अब व्हाट डज दिस जस्ट history says, or we learn from history, many children when they were working in this kind of circumstances, they died of different reasons. Sometimes they fell from chimneys, and sometimes they were suffocated because of the soot, and they died. अब ये coffin, in the coffins of black, ये this phrase is very much important. It should be understood that these boys were dying only because of their work, and they were doing this kind of dangerous work only because they were black. तो ये एक बहुत important चीज है जो समझने वाली है, and Blake was talking about it, though he was trying to, in at least in this poem, he was trying to justify it, because society has work, and someone has to do the work. We will see in the coming lines how he justifies all this. And by came an angel who had a bright key. अब क्या हुआ जब जो है वो कोफन पड़े हुए थे, एंटोम वाज वाचिंग कि क्या था कि उसके पास जो है वो एक चाबी थी बड़ी चमकती हुई, एंड ही ओपन द कोफन्स एंड सेट देम ऑल फ्री. उन सब बच्चों को, जो ये डिक, जो नेड एंड जैक एक्स्ट्रा, उन सबको उसने जो है वो आज़ाद कर दिया. देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग द रन, और उन बच्चों ने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो वादी में दौड़ना शुरू कर दिया, हंसते हुए खेलते हुए. तो उसके बाद जो है वो एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन. अब वो दरियाओं में जो है वो नहाते, सूरज की रोशनी से जो है वो महजूज होते. ये इस स्टैंजा को जो है वो समझने के लिए जरूरी है कि ये ब्लैक चिल्ड्रन, दे kept in very bad circumstances, in a very harsh circumstances. Like इनको जो है वो नहाने के लिए भी पानी नहीं मैसर होता था, और दूसरी सहूलतें जो है वो बहुत ज़्यादा मैसर नहीं होती थी. खेलने के लिए ऑफ कोर्स इनके पास जो है वो टाइम नहीं होता था. यहाँ पे ब्लेक जो है वो इज ट्राइंग टू शो हाउ चाइल्डहुड शुड बी, कि चाइल्डहुड में जो है वो बच्चे को जो है वो क्या करना चाहिए, उसे खेलने का बहुत ज़्यादा जो है वो मौका मिलना चाहिए, उसे खुश रहना चाहिए, और उसकी बहुत अच्छी तरह से जो है वो ख्याल रखा जाना चाहिए. लेकिन ये ब्लैक चिल्ड्रन जो है वो कब इस किस्म की सिचुएशन, कब इस किस्म की सूरत हाल जो है वो हासिल करेंगे, दिस इज वेरी मच ट्रेजिक टू थिंक कि ओनली आफ्टर देयर डेथ दे विल गेट दिस काइंड ऑफ चाइल्डहुड, दिस काइंड ऑफ लाइफ. वो सिर्फ उनकी मौत के बाद जो है वो होगा, जब व्हेन दे विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल द रेशियल prejudices and all the bad things of which have been attributed to them in this world only because they were black. Next stanza जो है वो देखें, then naked white all their bags left behind, यानी उन्होंने अपना जो है वो काम वगैरह सब कुछ जो है वो पीछे छोड़ दिया. They rise upon clouds and sport in the wind. Again a very idyllic picture of childhood के बच्चों के साथ जो है वो क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरह से जो है वो खेलना चाहिए. And the angel told Tom if he would be a good boy. एंजल ने, फरिश्ते ने भी जो है वो क्या बताया. ऑफ कोर्स यहाँ पे फरिश्ते को आप जो है वो रिलीजन के साथ जो है वो एट्रीब्यूट करके समझने की कोशिश करेंगे कि रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं वो इसके बारे जो है में जो है वो क्या है कि किस तरह से इस किस्म की इन ह्यूमन सिचुएशन को जो है वो ह्यूमनाइज जो है वो किया जाता था. कि अगर फरिश्ते ने जो है वो बच्चों को बताया कि अगर वो अच्छी तरह से जो रहेगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय, कि अल्लाह ताला जो है उसका बाप होगा और उसे कभी भी खुशी की कमी नहीं होगी. यानी यहाँ पे आप इन लाइनों को देख सकते हैं कि किस तरह से रिलीजन को एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर ऑल द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी. अगला स्टैंजा देखें इस पोएम का. एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क. अब जो है ये ऑफ कोर्स इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन. टॉम जो है वो बेदार हुआ
और हमने जो है वो तारीकी में जो उठे एंड गॉट विद अवर बैग्स, क्या किया, अपने बैग्स वगैरह लिए, और ब्रश वो जिसके साथ चिमनी साफ कर, टू वर्क, काम पे लग गए। थ्रू द मॉर्निंग वॉज दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। अब सर हालात अगरचे अभी तक जो है वो अनफेवरेबल थे, लेकिन टॉम जो है वो खुश था, वो पुरजोश था, क्योंकि ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ अ लाइफ वेयर ही विल गेट चांसेस of playing, of being happy, being related to God. So if all do their duty, they need not fear. हाँ, अब ये लाइनें जो हैं वो these lines are very much important. It is very difficult to point out, to understand whether Blake was endorsing this practice or he was criticizing this practice. अब इसको जो है वो समझा जा सकता है अगर उसकी पोएम जो है वो जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में है उसके साथ मिलाकर, लेकिन आप इस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की इस पोएम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रैक्टिसेस दे वर वेरी मच कॉमन इन द सोसाइटी विच हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी इन द वर्ल्ड टुडे, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एंड जस्ट 200 ईयर्स अगो वहाँ पे किस किस्म की सिचुएशन थी, लेकिन सिचुएशन जो है वो किस तरह से चेंज हुई है, ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जब आप जो है वो बात करना शुरू करते हैं अपने मसाइल के बारे में, अपनी इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस जो आपकी सोसाइटी में चल रही होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग, चीज़ें तब्दील होने लग जाती हैं। एंड आइडियल सिचुएशन दो remains far ahead, but a lot of improvement is made. England today is a lot better than it was 200 years ago. तो ये बात जो है वो समझने वाली है। और ब्लेक को हम यहाँ पे जो है वो जब when no one was, everyone was जो है वो endorsing this and no one was witnessing this practice with the human eye, Blake at least talked about it, though he is justifying. But in his poem from Songs of Experience, the situation is a little bit different. We can see there that Blake is now criticizing this practice, and he is criticizing the religion which is used to exploit the situation of these poor and unprivileged classes of the society. चलिए जी हम पहले उस पोएम को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कोई बात करते हैं। लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो। अब यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन जो है वो चेंज हुई है। फर्स्ट पोएम में नरेटर जो है वो ब्लैक बॉय है जो चिमनीज साफ करता है। यहाँ पे इट इज समवन एल्स एंड ही डिस्कवर्स अ ब्लैक बॉय, जो है वो उसे बर्फ में एक स्याफाम लड़का जो है वो मिलता है और वो उसे बड़े छोटा सा जो है वो नजर आ रहा था। ये लिटिल ब्लैक थिंग, ये दिस फ्रेज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि चिमनीज में बच्चों के दाखिल होने के लिए उनकी जिसामत जो है वो बहुत कम होनी चाहिए थी, और ऑफ कोर्स उनकी जिसामत को कम रखने के लिए जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस सोसाइटी में इन्वॉल्व थी कि उनको खुराक जो है वो पूरी नहीं मिलती थी या उनको इस तरह से रखा जाता था कि वो पूरी तरह से जो है वो ग्रोथ ना पा सकें। क्राइंग वी वीप इन नोट्स ऑफ वो, और बच्चा जो है वो रो रहा था, वो छोटा बर्फ में लिपटा हुआ। वेयर आर दाई फादर एंड मदर, नरेटर ने उससे पूछा तुम्हारे अम्मी और अब्बू कहाँ पे हैं, से बताओ। दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। अब वो दोनों जो है वो कहाँ पे हैं, वो चर्च में हैं, वो बच्चा जो है वो बताता है। अब ये दिस लाइन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी अंडरस्टूड एट सम लेंथ कि चर्च और वहाँ पे उनका काम जो है वो क्या है, कि वो अल्लाह ताला की जो है वो इबादत कर रहे हैं, अपने गॉड को जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइल दे हैव लेफ्ट देयर इनोसेंट चाइल्ड बिहाइंड। और उन्होंने क्यों, बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ, क्योंकि मैं जो है वो यहाँ खुश था। एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो, और ये बर्फ जो है इसमें रहने पे खुश था। दे क्लोथ मी इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ, क्या किया उन्होंने, मुझे जो है मौत का लिबास पहना दिया, सफ़ेद लिबास जो है वो मौत के साथ एसोसिएटेड। एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और उन्होंने जो है मुझे ये दुख, ये तकलीफ जो है वो सिखाई। ऑफ कोर्स दे सोल्ड हिम, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्ट ऑफ सेलिंग हिम हिज लाइफ बिकेम वेरी मिजरेबल। उसकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई। इस तरफ जो है उसका इशारा हो सकता है। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी डांस एंड सिंग, क्योंकि मैं जो है वो खुश हूँ।
और मैं जो है वो गाता हूँ। ये आयरॉनिक लाइंस हैं। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, उनका ख्याल है कि उन्होंने मेरे साथ जो है कुछ ज्यादती नहीं की। एंड आर गोन टू प्रेज गॉड हिज प्रीस्ट किंग। अब यहाँ पे गॉड, रिलीजन, प्रीस्ट और किंग को जो है वो इक्वेट जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि ये दीज थ्री पीपल वर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द गुड थिंग्स और ऑल द बैड थिंग्स इन द सोसाइटी। ये लोग जो है वो जिम्मेदार होते थे सब अच्छाइयों और बुराइयों के। हु मेक अप अ हेवन ऑफ मिजरी, क्या किया है इन लोगों ने जो है हमारी तकलीफ से जो है, हमारी तकलीफ से जो है वो अपने लिए बड़ी कंफर्टेबल किस्म की सिचुएशन जो है वो पैदा किया। तो इस पोएम में जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है, criticism is very sharp and direct on religion, on politics and on God। तो यहाँ आप जो आसानी से समझ सकते हैं कि ब्लेक जो है वो किस किस्म की बात जो है वो कर रहा है और वो what sort of message he wants to convey। तो स्टूडेंट्स, these poems are included in MA English Part 2 in the syllabus of many universities, and the students have to study these poems, and then they have to answer different questions based on these poems. And one of the important question is explanation with reference to the context, where they are given a few lines from the poem, and they have to write the explanation what they find the message in the poem, the theme of the poem, and the language and the style of the poet। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें मिलती हैं। यू विल हैव टू प्रिपेयर इट, एंड मोर यू विल हैव टू प्रिपेयर लॉन्ग एसे। एक क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ता है जिसमें आपने जो है वो जो भी आपने पोइट्री किसी पोइट की पढ़ी होती है उसकी उस पर बेस करके जो है उस पोइट की जो मेजर ट्रेट हैं उनको आपने देखना होता है कि हाउ दोज ट्रेट्स हैव बीन ट्रीटेड इन दैट पोएम और इन दोज पोएम्स विच यू हैव studied। It is not very much difficult, but if you practice you can master all these things। Inshallah we will be talking about something else in our next video lecture। Till then अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते एक बात जो मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है ये इस किस्म की लेसन्स जो है वो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं तो इस चैनल एडमेट पब्लिक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।